Let's solve this 42nd problem. हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पहले पढ़ेंगे. Assuming a tunnel is dug along chord of earth at a perpendicular distance of r by 2 from the earth center. Now this is earth. अर्थ के सेंटर से r by 2 की दूरी पर इस तरह से कॉर्ड के फॉर्म में we dug a tunnel like this. This is at a distance of r by 2 in the form of a chord. I think they had described the problem in this manner only. Assuming that a tunnel is dug along the chord of earth with perpendicular distance r by 2 from the earth center, where r is the radius of earth. The wall of tunnel is frictionless. Tunnel की wall frictionless. Find gravitational force exerted by earth on the particle of mass m placed in a tunnel at a distance x from the center of tunnel. Let me use colored chalk here. At some point this is at a distance of x from the center of tunnel. Now gravitational force exerted by earth on the particle of mass m placed in a tunnel at a distance of x from the center of tunnel. देखिए, this is at some distance r. This is at some distance r, where this r is equal to under root of r square by 4 plus x square. At this point, what is the gravitational force? Gravitational force would be having this direction. And this gravitational force within the earth, within the solid sphere. Recall that gravitational field at any distance r is gm by r cube into r. If r is less than r, this is gravitational field within solid sphere. Solid sphere के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड यह होती, हमने देख रखा है. बस हम इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देंगे. इट्स जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर की जगह पर हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ r square by 4 plus x square. This is gravitational force exerted by the earth on the particle of mass m placed in tunnel at a distance of x from the center of tunnel. This is part A, the answer to part A. Now part B, find the component of this force along the tunnel and perpendicular to tunnel. Along the tunnel, this is force and perpendicular to tunnel, this is the force. मैं इधर थीटा लिख देता हूं. दिस इज थीटा. लेट अस से cos theta is r by 2 upon r, or r by 2 upon under root of r square by 4 plus x square, and sin theta is x by r, that is x upon r square by 4 plus x square to the power half. अब मैं पार्ट बी का आंसर लिख रहा हूं.
along the tunnel जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं. इट वुड एग्जीक्यूट एसएचएम. एक्स की दूरी पर है, along द टनल जो फोर्स होगा दैट इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू this theta sin theta. So this is gravitational force and this is sin theta. So this into sin theta जब हम करेंगे तो g m by r cube into x होएगा and perpendicular टू टनल जो होगा वह नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा. इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, पक्का है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है कंपोनेंट. दैट नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू कॉस कंपोनेंट ऑफ इट. दैट कॉस कंपोनेंट वुड बी दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज अ कॉस कंपोनेंट. तो डिनोमिनेटर में जी एम बाय आर क्यूब, दिस टर्म वुड कैंसल इनटू आर बाय 2. दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन. और आई विल से 2 जी एम बाय आर स्क्वायर. सॉरी, जी एम by 2r square. This is the perpendicular component. Now, this is answer to part B. Find normal force exerted by the wall on the particle. Simple सी बात है. C का तो आंसर मैंने लिख दिया है. Normal reaction is gravitational force into cos theta and that is g mm by 2r square. In fact मैं इधर ही लिख देता हूं. This C part, answer to C part. Find resultant force on the particle. Resultant force on the particle is restoring force and this is gravitational force into sin theta. This is the restoring force and this is g mm by r cube into x. This is the resultant force. Show that the motion of particle in tunnel is simple harmonic. Find the time period. हम already देख रहे हैं that this resultant force is restoring force and this is gmm by r square into x. It's opposite to x. Opposite to x. This is the mean position. यह जो पॉइंट है मीन पोजीशन है. सेंटर ऑफ टनल इज मीन पोजीशन. दिस पॉइंट इज मीन पोजीशन. और आई विल से दिस फोर्स इज माइनस जी एम एम एक्स बाय आर स्क्वायर और एक्सीलरेशन इज माइनस जी एम बाय आर क्यूब into x और ओमेगा स्क्वायर इज जी एम बाय आर क्यूब और टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम. दिस इज द आंसर. टेक इट डाउन प्लीज. एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. हेंस इट्स एसएचएम. सबसे पहले हम यह कंक्लूड कर लें कि जब एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई इट्स एसएचएम एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज जीएम बाय आर क्यूब. जीएम बाय आर क्यूब and his time period is 2 pi r cube by gm.
एक बात इधर जरूर नोट करें, टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में हमेशा 2 पाई न्यूमरेटर में है और फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में हमेशा 2 पाई डिनोमिनेटर में है। ये जो पॉइंट है बड़ा काम आएगा ऑब्जेक्टिव्स के समय, जब 4 ऑप्शन दिए हुए हों, टाइम पीरियड पूछा हुआ हो, तो देख लीजिए कि सिर्फ वही ऑप्शंस, वही ऑल्टरनेटिव सही है जिसमें 2 पाई न्यूमरेटर में दिख रहा है। प्लीज नोट डाउन इट्स सॉल्यूशन, बड़े ध्यान से देख लीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, इसमें ग्रेविटेशन के कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन आया और थोड़ा जो एनालिसिस भी आया, फोर्स को रिजॉल्व करने वाला, नॉर्मल रिएक्शन को समझने वाला, और साथ में रिजल्टेंट फोर्स को समझना और रिजल्टेंट फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहना, रेस्टोरिंग फोर्स को अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट समझ जाना। दिस वॉज अ चैलेंज इन दिस प्रॉब्लम बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और इस तरह के प्रॉब्लम जनरली हम क्लास में सॉल्व करते ही हैं। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ मूव ऑन टू 47th प्रॉब्लम। लेट्स डिस्कस 47th प्रॉब्लम नाउ। A earring of a lady shown in figure, एक लेडी का चेहरा बना रखा है, खासकर उसकी ईयररिंग से मतलब है हमें तो सर, और ये उसके कान है और ये इसमें ईयररिंग है। 3 सेंटीमीटर लॉन्ग सस्पेंशन वायर, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग सस्पेंशन वायर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इफ लेडी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। तो पार्ट ए का जो आंसर होगा 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट ऑफ, लेंथ की जगह 0.03, G की जगह 9.81, दिस मच सेकेंड। दिस आंसर टू पार्ट ए। The lady now sits in a merry-go-round moving at 4 meter per second in a circle of radius r। अब यह एक मेरी गो राउंड में बैठ जाती है, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की वजह से जो इफेक्टिव जी होने लगेगा वो इस तरह से हो जाएगा। मैं कहता हूं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। So velocity is whatever is the velocity and r is radius। अब जो g effective होएगा, g effective would be under root of g square plus v square by r whole square और under root of g square by v to the power 4 by r square। This is g effective। और अब हम यह जी इफेक्टिव की वैल्यू रखेंगे। मैं इस जी इफेक्टिव की वैल्यू डिटरमाइन कर लेता हूं पहले, अंडर रूट ऑफ 9.81 होल स्क्वायर प्लस वेलोसिटी स्क्वायर में रखूंगा वेलोसिटी टू पावर 4, तो 4 टू द पावर 4 16 256 बाय आर, रेडियस इज 2 मीटर, सो 4, सो दिस बिकम्स 64 अंडर रूट ऑफ 64 और इसको भी मैं 10 स्क्वायर कर देता हूं प्लस 64, 100 प्लस 64 इस तरह से लिख देता हूं रफली सॉल्व करने के लिए। दिस इज इफेक्टिव जी और दिस अंडर रूट ऑफ 164। नाउ आई विल राइट द न्यू टाइम पीरियड t डैश इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G इफेक्टिव। Solve it। 2 into 3.14 into under root of, for length once again I'll write 0.03 and for G under root of 164, this much seconds is T dash। This is a time period of small oscillation of earring। Now we'll solve 48th problem। हम इस बात को समझ जाए कि इस ईयर रिंग पर उस केस में मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, यह पोजीशन हो जाएगी ईयर रिंग की और उस पर
एम वी स्क्वायर बाय आर एक फोर्स ऐसे लगेगा और एम जी ऐसे लगेगा और यह रिजल्टेंट होगा और इसकी वजह से हम जी इफेक्टिव देखेंगे और यह इसकी ऑसिलेशन की मीन पोजीशन भी बनेगी और इस तरह से हमने जी इफेक्टिव और नया टाइम पीरियड डिटरमाइन करा है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 48 द प्रॉब्लम.